Hello everyone, good morning students. Today we are discussing a new topic, multiplication of vector by real number. In this you can see that real number is a scalar quantity, and when you will multiply a vector with a scalar quantity, only the magnitude of the vector will change, the direction will remain same. Like you can see here, let us suppose lambda is a vector. Lambda is a number which is a real number, and this is a scalar quantity. As you know that 2, -5, 1.5, 3.2, so everything is a real number, and this can be positive, this can be negative. If the real number is positive, then the magnitude of the resultant vector will become lambda times of magnitude of a. Like you can see in the diagram, this is vector a, this is vector 2a. अगर आपने lambda की value 2 ली है, but if the lambda is negative, then what can you say? It will become minus lambda a. Let us suppose a, this is minus a, and this will become minus 1.5a. तो जब आपका नेगेटिव वेक्टर होता है तो उसके डायरेक्शन नेगेटिव रियल नंबर होता है तो उसकी डायरेक्शन इनिशियल के ऑपोजिट हो जाती है, और अगर आपका पॉजिटिव रियल नंबर होता है तो उसकी डायरेक्शन इनिशियल के जैसी ही बनी रहती है. सो यू कैन सी दिस बाय multiplication of vector by real number, or simply you can say multiplication of a number by scalar. We will see multiplication of vector with vector in our next video. So next topic is addition of vector. We have discussed triangle law of vector addition in our previous video, so we are moving further. We have discussed about parallelogram law. Now we are going to discuss about polygon law. What is polygon law? पॉलीगन लॉ में बेटा आपको पता है ट्रायंगल लॉ और आपका जो पैरेललोग्राम लॉ है, both the laws are valid for the addition of at least two vector. So the next case is polygon law. As the name defines, polygon के अंदर आपके more than two vectors exist कर सकते हैं. Let us suppose यहाँ पर तीन वेक्टर हैं, तो हमें इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है. हम इन तीनों वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे? तो हमें दो की हेल्प से हमें ट्रायंगल लॉ ही यूज करना है. जब हमें पॉलीगन लॉ के लिए वेक्टर्स को ऐड कराना है तो हम उसमें बेसिक देखेंगे ट्रायंगल लॉ को ही. तो ट्रायंगल लॉ आपका क्या कहता है? दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. वी आर फिक्सिंग द वेक्टर ए एंड वी आर शिफ्टिंग द वेक्टर बी टू द हेड ऑफ वेक्टर ए. नाउ द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस बी. नाउ वी आर शिफ्टिंग वेक्टर सी and the resultant is represented as a plus b plus c. So this is our polygon law. polygon law के अंदर हमें क्या करना है? दो वेक्टर को ऐड करते जाओ, उनका रिजल्टेंट लो, थर्ड वेक्टर को ऐड करो, अगेन दो वेक्टर को लो, थर्ड का रिजल्टेंट लेके ऐड करते जाओ. इन द सेम वे यू कैन गो फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर. लाइक यू कैन सी देयर आर सो मेनी वेक्टर्स लाइक दिस. सो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि आपका इनिशियल वेक्टर के टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही आपका होता है. तो लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. आप अलग अलग भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हो, बट द रिजल्टेंट इज गिवन एज हेड ऑफ last vector to the tail of first vector to the head of last vector. So this is your resultant vector, and that will be equal to a plus b plus c plus d plus e. जितने भी वेक्टर आपके आते हैं सबको ऐड कर दो, फर्स्ट के टेल से लेके लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दो. दैट विल रिप्रेजेंट योर what? Vector addition. Now next thing is parallelogram law is also according to vector addition. You can see that you can use these two terms OA plus OB. OA plus OB, this will be equal to OC. This is our parallelogram law of vector addition. We have seen that the diagonal of a parallelogram is representing the addition of two vectors. Now next point is subtraction of vectors. What is subtraction of vectors? Subtraction of vector can be defined by the vector addition of one vector with the negative vector of the other. जब आप एक वेक्टर को नेगेटिव के साथ ऐड करते हो, लुक एट दिस स्लाइड, दिस इज वेक्टर बी. नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बेसिकली, बट यू कैन ऐड माइनस ऑफ बी विद ए. यू आर जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ बी वेक्टर, देन यू आर एडिंग द माइनस बी विद ए. सो लुक एट द डायग्राम, concentrated. This is changing the direction. Look at this, changing the direction. Now what is happening? We are shifting this vector towards head of A. Now we are adding, so representing resultant will be represented as A plus minus B, and this will be equal to A minus B. You can see that A vector, any vector with negative of that individual vector will be represented as zero vector.
So a plus minus a is given as 0 vector. Next point is resolution of vector. We will discuss this point in our next video. Thank you बच्चे. Good luck.